सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है धरती सुनहरी अंबर नीला। यहाँ से जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Namaskar, Suprabhat, a very good morning to all. Respected dignitaries, faculty members, staff and dear students, on behalf of the Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology and its sponsoring body, the India Education Trust, I extend heartiest greetings and best wishes to all on the occasion of the 73rd Republic Day of our motherland, India. It gives me immense pleasure in welcoming our Honorable Chief Guest, Emeritus Chairperson, Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, Chairman and Managing Trustee, India Education Trust, Dr. M.L. Swarankar. We also welcome the Honorable Chairperson of Mahatma Gandhi University, Dr. Swarankar, Vice Chancellor, Mahatma Gandhi University, Dr. Sudhir Sachdev, Pro Vice Chancellor of the University, Dr. G.N. Saxena, Dean, Principal and Controller, Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Dr. Swati Garg, and Registrar, Mahatma Gandhi University, Dr. A.K. Sharma. We also welcome members of the Board of Management, principals of all associated colleges of the university, administrative heads of the organization, staff, and all undergraduate and postgraduate students. भारतवर्ष के 73वें गणतंत्र दिवस समारोह में मैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। I now request the Dean, Principal and Controller, Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Dr. Swati Garg, to deliver the welcome address and also to share the accomplishments of the last academic and calendar year. Dr. Swati Garg. Namaskar. On the occasion of 73rd Republic Day of our nation, I extend my greetings and a very warm welcome to Chief Guest of today's function, Dr. M.L. Swarankar sir, Emeritus Chairperson, Mahatma Gandhi University of Medical Science and Technology, and Chairman Managing Trustee, India Education Trust. To Dr. Swarankar, Chancellor, Mahatma Gandhi University, dignitaries attending the function, faculty members, staff and students of the university. As we begin with the new calendar year, it is time to review the latest this year's events, especially in view of academic and clinical accomplishment of our institute. The last academic year was extended, unfortunately, due to COVID pandemic.
But I am glad to share that despite all hurdles, our university managed to conduct all its academic activities in a timely manner. All classes and examinations were conducted as per the state and central government and regulatory body guidelines. This year was phenomenal for Mahatma Gandhi Medical College as we got permission for annual intake of MBBS students from 150 to 250 from National Medical Commission. Similarly, an increment of 60 to 100 seats for BDS was granted to Mahatma Gandhi Dental College from Dental Council of India. We got permission to initiate MGUMST programs in 6 new disciplines: palliative medicine, nuclear medicine, immunohematology and blood transfusion, physical medicine and rehabilitation, traumatology and family medicine. Not only this, we also got permission for super specialty courses in 6 more disciplines: critical care medicine, intervention radiology, neonatology, neuroanesthesia, organ transplant anesthesia and hepatopancreatobiliary surgery. With the intention to further strengthen the faculty development program, our institute has applied for recognition as Regional Center for Medical Education, and fulfilling all the standard requirements, we are hopeful to get the approval soon. Recently, we witnessed NABH audit for re-accreditation and NAC pre-attend visit of our university. The registration for the National Institutional Ranking Framework and Association of Indian University have already been done, and work is in progress to complete the due formalities. Mahatma Gandhi University got permission for 2 units of National Service Scheme this year of 100 students each by the government, and is actively organizing various activities through these units. We have collaborated with POYO for better maintenance and security of all our hostels. This year, Mahatma Gandhi Hospital was awarded Swachh Parisar Award for 3 consecutive times by Jaipur Nagar Nigam in Swachh Sarvekshan 2022. It was, I would like to summarize by saying that irrespective of challenges of pandemic, Team MGUMST, right from top management to the faculty, staff and students, have dedicatedly contributed to the institutional growth. I wish you all a very happy Republic Day and wish good luck to all members of Mahatma Gandhi University family in this journey of quality and excellence towards brighter and prosperous India. Thank you, Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for sharing all the accomplishments. It was on November 26, 1949, that the Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly, and it formally came into effect on January 26, 1950. Indeed, it is a matter of great pride for every citizen of our nation as we commemorate the day of implementation of our Constitution. Today is the day to reaffirm our commitment to abide by the solemn features of our Constitution and pledge to ensure unity in diversity and equality for all sections of the society. I am glad to share that the university has also laid down its code of conduct and defined the rights and responsibilities for all its students, staff members and faculty members. I now request the Pro Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. G.N. Saxena, to address us and motivate us on the occasion of Republic Day. Good morning, everyone. On the occasion of the 73rd Republic Day, I extend my greetings and a very warm welcome to our chief guest of the function, Dr. Swarankar, the Emeritus Chairperson and the founding light of the entire institution. And also to Dr. Swarankar, the Chairperson, the Vice Chancellor, the Deans of all our faculties and all our faculty members. A very good morning to all of them. Now, when we start off with a new year, we must review what we have been doing and what we wanted to do. Dr. Swati has already enumerated the various achievements of the institution that have been in the last 1 year. Now we must look at what we started off with. 22 years or so back, when the institution was first started, our aim was to establish an institution which would be emulated by others, which would be the flag bearer of several things that included the teaching, the research, the patient care, and not just that, ethical practices in all times to come.
Now, I am proud to say that our institute has been on the forefront of all these activities, the aim was and what it started off with. The mettle of a person or a university or a college or a nation is tested not just in normal times, but also in times when the things are not going smoothly. When the nation witnessed the pandemic of the coronavirus, not just the first wave, the second wave, and then the consecutive third wave, this is when our true colors came out, and we could prove to the society that we stood at number one in handling of the patients, in taking care of the patients with an empathetic, sympathetic view, and this was all possible because of the faculty, the staff, the nursing staff, and overall by the lead shown by Dr. Swarankar, Dr. Vikas, Ratanji in particular, who was present all the time, everywhere, to take care of the small glitches that could take place. And once we could come out with flying colors in a very difficult situation like this, I am sure the coming years will also see us handling all situations. Hopefully we will not have to face such terrible situations again. But if we do, we have tested ourselves, proved ourselves, and will go forward as much as possible. And with all the new developments taking place, which Dr. Swati Garg, our principal, has just enumerated, I am sure our university, the Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology, will be the first name which other people will want to follow. Not just somebody doing their own thing, but अपने को काम करना है तो महात्मा गांधी जैसा करना है. And जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, I am sure we are already on track. When we talk to the postgraduate students who are wanting to come to the institute, this remains the first choice for most of the students. And with the availability of new specialities, with the availability of new MD and DM MCS seats, I think we have covered the entire gamut of the academic activity that is available. New teaching material, new teaching aids, we have new anatomy tables which are electronically operated, where you can see the body level, layer by layer. All these things add to the technical excellence of an institute. And I am glad all of us as a team have been able to reach this level. Congratulating everybody again on the occasion of the 73rd Republic Day. I wish everybody a very good morning and Jai Hind. Thank you, sir, for your motivational words and the best wishes shared. When we look back at the year that has gone by, we realize that it was a mix of challenges as well as achievements for our institution. As the Vice Chancellor of Mahatma Gandhi University, Dr. Sudhir Sachdev has been a true team leader who constantly stood by the top management and at the same time motivated Team Mahatma Gandhi University to undertake the challenges of preparations of various academic inspections and implementation of all activities as per the academic calendar as well as guidelines laid down by government time to time. मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय डॉक्टर सुधीर सचदेव से कि वे आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सबको अपने उद्बोधन से प्रोत्साहित करें. आदरणीय डॉक्टर सुधीर सचदेव. नमस्कार. आज राष्ट्र के 73वें गणतंत्र दिवस के पुनीत अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं. परमादरणीय डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार जी, हमारे मार्गदर्शक, प्रणेता, एमेरिटस चेयरपर्सन, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के आप चेयरपर्सन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं. आप आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं. मैं महात्मा गांधी विश्वविद्यालय की तरफ से हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर एम.एल. स्वर्णकार जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ. समय समय पर आप द्वारा दिया गया मार्गदर्शन और प्रोत्साहन सदैव ही हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहा है. आज इस अवसर पर इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती मीना स्वर्णकार भी हमारे बीच उपस्थित हैं. मैं आपका भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ. विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन एवं चांसलर माननीय डॉक्टर विकास चंद्र जी स्वर्णकार, मैनेजिंग ट्रस्टी श्री राम रतन जी सोनी, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जी.एन. सक्सेना, रजिस्ट्रार डॉक्टर ए.के. शर्मा, डीन प्रिंसिपल एंड कंट्रोलर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल डॉक्टर स्वाति गर्ग, डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र पडियार एवं अन्य सभी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स जो इस समय हमारे साथ
ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उन सभी फैकल्टी मेंबर्स का, स्टाफ मेंबर्स का, विद्यार्थियों का भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विगत वर्ष में विश्वविद्यालय ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की, जिनमें जैसा कि अभी प्रिंसिपल साहब ने भी बताया, मेडिकल कॉलेज के को प्रेसिडेंट डॉक्टर GN सक्सेना जी ने भी बताया कि मेडिकल MBBS कोर्स में सीट्स की वृद्धि हुई, BDS कोर्स में 60 से 100 की वृद्धि हुई, नए पोस्ट ग्रेजुएट MD MS सब्जेक्ट्स बताया डॉक्टर स्वाति ने नाम लेकर के, उनमें हमें नई सीट्स मिली। DMMCH में भी हमको कई नए डिपार्टमेंट में अनुमति मिली है और आगामी वर्ष में भी हम नए सुपर स्पेशलिटी कोर्सेस आरंभ करने की दिशा में प्रयासरत हैं। 3 या 4 विषयों में हम इस वर्ष अप्लाई कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी हमें सीट्स हासिल होंगी। लेकिन एक विशेष क्षेत्र है जिसमें विगत वर्षों की समस्त प्रगति के बाद भी हम पिछड़ रहे हैं। आज समय है कि हम अपना पुनरावलोकन करें और उस पर गौर करें, और वो है रिसर्च और पब्लिकेशन का क्षेत्र। इस क्षेत्र में हम सभी को एकजुट होकर टारगेट ओरिएंटेड कार्य करते हुए अपने निर्धारित वार्षिक लक्ष्य को प्रतिवर्ष हासिल करना होगा। विश्वविद्यालय 1-2 दिन में ही एक पब्लिकेशन बोर्ड की घोषणा करने वाला है। मैं चेयरपर्सन साहब के साथ बातचीत हुई थी, मैं सोचता हूँ इसी सप्ताह में 1 या 2 दिन के अंदर हम इस पब्लिकेशन बोर्ड की घोषणा कर देंगे। लेकिन हम अपना एक वार्षिक लक्ष्य रखेंगे जिसको हम प्रतिवर्ष हमें हासिल करना ही है। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय के प्रो वाइस चांसलर, सीनियर प्रोफेसर्स, फैकल्टी मेंबर्स, कंसल्टेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस के सभी प्रिंसिपल से भी अनुरोध करूंगा कि वे इंटरनेशनली रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस के साथ MOU करने की दिशा में भी अपने प्रपोजल लेकर के विश्वविद्यालय के पास आए, जिससे विश्वविद्यालय मेडिकल एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज, इन सभी दिशाओं में इन संस्थानों के साथ मिलकर अपनी कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज कर सके। अभी राष्ट्रीय पहचान भी पूर्णतः बनाना हमारे लिए शेष है। अगर हम ये सब काम करेंगे, MOUs इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के साथ करेंगे, तब जाकर के हम अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना सकेंगे और हम शोध की दिशा में नए कार्य कर सकेंगे। हमारे स्टूडेंट्स, फैकल्टी एवं स्टाफ मेंबर्स को वैश्विक तरीकों और तकनीकों के बारे में पता लग सकेगा और हम अपने विश्वविद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं और संसाधनों का समुचित उपयोग कर सकेंगे रिसर्च और इनोवेशन की दिशा में प्रगति करने के लिए। ये बिल्कुल सही बात है कि इस समय भी हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं, संसाधन हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम उसका रिसर्च और पब्लिकेशन की दिशा में उतना उपयोग पूरा भी नहीं कर पा रहे, समुचित उपयोग भी नहीं कर पा रहे। तो ये हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम इस पर जागरूक हो और वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करके हम इसमें आगे बढ़ेंगे और प्रतिवर्ष हम इसको हासिल करेंगे। मैं एक बार पुनः आप सभी को इस 73वें गणतंत्र दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज हमारे इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन, हमारी मार्गदर्शक श्रीमती मीना जी स्वर्णकार का जन्म दिवस है। मैं उनके जन्म दिवस पर भी उनको विश्वविद्यालय की तरफ से, हम सभी की तरफ से हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं उनको जन्मदिन की, और आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार पुनः शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महात्मा गांधी विश्वविद्यालय। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir, for your inspirational address. The Mahatma Gandhi University is fortunate to have a young and dynamic personality, Dr. Vikas Chandra Swarankar, as its chairperson. He has been an administrator par excellence and has always ensured that our institution delivers all its services, both academic and clinical, in the best possible manner. Under his leadership, the institution has exhibited exemplary commitment towards quality and ethical conduct. It was this commitment that made Mahatma Gandhi Hospital attain the recognition of best healthcare provider during the COVID pandemic and as well as other medical facilities. The institutional infrastructure has also witnessed extraordinary progress with construction of the new academic blocks, state-of-art central lab, world-class blood center, and of course, various super specialities under one roof of Sri Ram Cancer Center. On behalf of entire Mahatma Gandhi University family, I congratulate you, sir, for all these accomplishments. I now request Honorable Dr. Vikas Chandra Swarankar
to address us on the occasion of Republic Day. Thank you, Dr. Bushra. Very good morning and warm welcome to our respected Chief Guest and Chairperson Emeritus of Mahatma Gandhi University, Dr. M.L. Swarankar, Vice Chancellor, Dr. Sudhir Sachdev, Pro-Vice Chancellor, Dr. G.N. Saxena, Registrar, Dr. A.K. Sharma, Members of Board of Management, Shri R.R. Soniji, Chief Finance and Accounts Officer, Dr. Shobhit Swarankar, Principal of Mahatma Gandhi Medical College, Dr. Swati, Mahatma Gandhi Dental College, Dr. Padiyar, Principals of various constituent colleges, eminent faculty members, Dr. B.A. Sharma ji, Professor and Head Neurosurgery, Dr. Nahata, Director of Center for Endoscopic Surgery in Gynecology, other eminent faculty members in the audience, staff members, students, friends who are watching the live telecast of this event online. I wish every one of you a very happy 73rd Republic Day of our great nation and motherland. Prior to this day, in the year 1950, the country was headed by the British monarch, the Viceroy, the Governor General. On this day, in that year, the Constitution of India was made effective by the Indian Constituent Assembly, a body of almost 300 members working for almost 150 days to draft our Constitution, and thereby completing the country's transition towards becoming an independent republic. And since then, we started having our own president. Why 26th January was chosen? It was the day in 1930 when we proclaimed complete Swaraj with the Declaration of Independence. A nation is nothing but a group of individuals willing to follow and be governed by a certain set of ideas, the laws, bound into a scripture, the Constitution, and sharing a common geographical place, the motherland. The beauty of our country is the diversity amongst religions, regions, castes, languages, etc. But even more beautiful is the unity shared by a single common faith, that is our Constitution. It is the duty of our coming generations to ensure that this grows stronger no matter what. How do you serve your nation? Not everyone goes to the armed forces or to political services or through offices of governance. Here, I fondly recall the words of our founder Vice Chancellor Dr. Hari Gautam ji, that if you want to serve the nation, the most suitable and the easiest way is to put your best effort with utmost sincerity and honesty for the organization you work for. Fortunately and by God's grace, your work directly involves serving the human beings in suffering as well. So it's a double benefit that you get by just putting in your sincere efforts. You get to serve your nation and you get to serve your society. This is a rare opportunity. Let us all utilize it well. I can state with pride that our team of doctors, residents, nurses, paramedical and administrative staff worked tirelessly during the COVID-19 pandemic and are still doing so. I, on behalf of Board of Management, express my gratitude to them. We are in the middle of a third wave, albeit a milder one, but due to the absolute number of cases in the society, there are hospitalizations and sick patients are needing specialized care. Plan for the worst and hope for the best has been the Institute's philosophy. The organization has now built sufficient infrastructure in terms of over 1,000 beds having piped oxygen supply, ICU beds that can be scaled to up to 400 in number if the need arises, almost 150 ventilators, n number of oxygen concentrators, state's largest oxygen generation PSA plant, adequate backup for liquid medical oxygen, and close to 1400 cylinders. There is adequate stock of required pharmaceuticals, consumables, and protective equipment. Our diagnostic facilities, including the state's first RT-PCR COVID lab, are ready to perform all the requisite tests in-house as we have been doing in the past. The Institute has started a 25-bedded pediatric ICU unit along with a 5-bedded pediatric pediatric dialysis unit and renal transplant unit, catering exclusively to pediatric population
in the age group of 3 months to 16 years. The university, apart from providing vaccination to its own staff members, has provided free booster vaccination dose to all doctors of Jaipur and adjoining areas. This year, as has been told by the other speakers, 2 major accreditation processes have been conducted so far. One is the very exhaustive NAC accreditation of the university, and second is continuation of NABH accreditation of the hospital. The results of both are awaited and will be out after completion of a due and a long process. I would like to thank the core team of faculty members involved in the NAC process, especially in compiling and presenting humongous data and putting over 12 hours a day for most days in a week for months together. Also, our NABH team, who are now a specialized group in their field, smoothly undertake quality implementation and validation process. The university envisions to develop into an institution of excellence at par with global standards in the field of healthcare and allied sciences that is driven by quality teaching, training, research and innovation. I am looking forward to the board of research that has been formulated by the university, by the academic council, and I hope that we now get some quality publications that are indexed in the UGC care list, in the Scopus, and as required by other statutory bodies. Number of publications is the sole criteria by which the university will be judged. There is no second criteria. Number of publications, and we being a medical university, most of our students are placed. So placement is not a challenge for us. It will never be a challenge for us. All we have to do is publish, publish and publish. Paper publications should be directly linked. This is a suggestion to the university, a strong suggestion, directly linked to the promotion and salary appraisals of faculty members, not only in medical and dental, even in allied sciences, nursing sciences and physiotherapy. We should encourage incubation of more number of startups on the campus. If required, we should take help from engineering and management universities, the IIMs, the ISBs, to incubate startups on campus. This is the way forward, this is the way to go. We should apply for maximum patents. Faculty, students who are working towards patents should be given very special attention and very special benefits. Something like this should be formulated by the Board of Research and by the Academic Council. As stated by the previous speakers, the university now has permission for 250 MBBS and 100 BDS students. The counselling for the same is underway. I congratulate everyone involved in the process. The total number of PG seats in our university are over 150 and 60 seats in DM and MCH. We are offering some of the unique programs in MD, MS, DM, MCH in the state, like hepatopancreatobiliary surgery, only the second institution in the country to do so, interventional radiology, critical care medicine, organ transplant anesthesia, nuclear medicine, family medicine, palliative medicine, trauma surgery, to name a few. These courses should be propagated amongst the prospective student community through advertisements and word of mouth, so that we are able to fill all of them and to drive the course further. Also, I would like to request the Vice Chancellor and the Registrar to expand the horizon of new courses being offered at our universities in untouched disciplines like biotechnology and genetics, and to spread the utility and popularity of our courses, especially in hospital administration, health informatics and other paramedical disciplines. There is a lot of scope. We can have a lot of student intake in that. We should propagate it with utmost sincerity. I would like to congratulate and convey my best wishes to the liver transplant team, GI surgery team and hepatology team for establishing life-related liver donor transplant program. I can safely say the program has now been established. We are performing close to 3 liver transplants every month with excellent results. Our bone marrow transplant program, both for neoplastic conditions and thalassemia disorders, is doing well. I wish them all the best for the future and assure them all the help required from the management's end. I can very well foresee Mahatma Gandhi Hospital as an extremely busy healthcare facility in the coming few months and years.
best quality of medical care requires highest standards of nursing. Like year 2021, year 2022 also be dedicated towards drastically improving nursing care to the best of standards. We, being a medical university, have a lot of mandatory deviations. We have to go for NMC inspections, we have to go for NAC accreditation, we have to go for NABH. All these things will continue. But our commitment towards improving nursing care, improving ancillary medical care should not get deviated. We should form a separate team and we should have a unidirectional focus in improving these areas. With over 850 nursing personnel, it is not possible without the active cooperation of all the stakeholders. I request all the head of the departments, specialized departments like neurosurgery, cardiac surgery, oncology, to participate in training and teaching of nursing program. Their retention, appraisal is the duty of management, we'll take care. But teaching, training, behavioral has to be taken care by the nursing admins, by the hospital administration and by the clinical heads. Let us all come together and achieve this target. Today we are missing the presence of a founder chairperson, Dr. R.P. Sonawala, a larger-than-life figure in obstetrics and gynae, and a life guide to my father. In the interest of safety, he is not joining us and he is keeping safe in Mumbai. I can say with pride and humility, it's the vision and guidance of our chief guest, my father, Dr. Swarankar, that is propelling this magnanimous project forward. He is the energy behind this great organization. He is not only God-gifted, but has extreme dedication and perseverance for any task he undertakes. Not only mentally, even physically, he works hard than most of us in the organization, making this a perfect possible recipe for success. Last but not the least, it's the blessings of my mother, Srimati Meena Swarankar, the Vice Chairperson of India Education Trust. She has been a rock-solid support system for my father. The values of honesty and integrity instilled in us by her are the true driving force behind this great institution. Happy Republic Day once again. God bless every one of us. God bless Mahatma Gandhi University of Medical Sciences and Technology. God bless our country. Jai Hind. Thank you, sir, for your words of encouragement and motivation. We are blessed to have with us a great visionary, a strong believer of Gandhian principles, and a true idol of the ideology of simple living and high thinking. Honorable Emeritus Chairperson, Mahatma Gandhi University, Chairman and Managing Trustee, India Education Trust, Dr. Emeritus Swarankar. Sir, you have always been and shall continue to be our guiding light. Your vision, your dedication, your efforts made you lay down the foundation of this institution, and your zeal, your motivation, your leadership skills, and your commitment to serve the society make you the jewel of the Mahatma Gandhi University crown. Most humbly, sir, I request you to bless us with your words of wisdom. Honorable Dr. Emeritus Swarankar. थैंक यू डॉक्टर बुसरा। सबसे पहले मैं आज 73वें गणतंत्र दिवस पर सबको अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। विश यू ऑल ए वेरी हैप्पी 73rd रिपब्लिक डे ऑफ आवर नेशन। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान का मतलब है संविधान, यानी एक तरह की संहिता, एक तरह की विधियां, कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज, जिसकी फ्रेम वर्क में, जिसकी गाइडलाइंस में हमको हर तरह से पालन करना है। तो जो हमारा संविधान है वही हमारी गीता है, वही हमारा रामायण है, वही हमारी कुरान है, वही हमारी बाइबल है, वही गुरु ग्रंथ साहिब है। जो कुछ है वो हमारा भारत का संविधान है। उसका उसी तरह रेस्पेक्ट करें जैसे आप अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं, और विदिन जो भी आप अपना काम करें वो विदिन 4 बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसमें करें। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आज इस अवसर पर मैं सबसे पहले हमारे फाउंडर चेयरपर्सन डॉक्टर R.P. सोनावाला, डॉक्टर रुस्तम फिरोज सोनावाला, जो कोविड पैंडेमिक की वजह से आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है,
जो हमेशा हमें ब्लेस करते आए हैं। और जैसा कि हमारे चेयरपर्सन डॉक्टर विकास स्वरणकार ने बताया कि ही इज़ डूइंग वेल एंड वी विश हिम गुड हेल्थ एंड हिज ब्लेसिंग्स, he has conveyed his blessings to the institution, to all of us. So we thank him for his blessings. आज हम डॉक्टर हरि गौतम जी जो बिकॉज ऑफ एज अभी घर पर ही हैं, पर जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी की एज ए वाइस चांसलर फाउंडेशन डाली, उसके लिए हम हमेशा उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे, उनके लिए ऑब्लाइज्ड रहेंगे। ये ऐसे उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि यदि आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में तो अपने जो श्रेष्ठ पुरुष हैं उनको फॉलो करिए। हमारे संस्थान में बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जैसे कि मैं आपको नाम गिनाऊं। होता क्या है यूजुअली कि जब आप 60-70 साल के हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसे रिटायरमेंट हॉलीडेज या अपना टाइम पास करने के लिए होते हैं, परंतु उदाहरण है जैसे डॉक्टर B.H. शर्मा है जो न्यूरो सर्जरी के हेड है, डॉक्टर सदासुकी हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में महात्मा गांधी अस्पताल का किडनी ट्रांसप्लांट में नाम किया है, डॉक्टर मुर्तज़ा अहमद चिश्ती हैं जिन्होंने पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया, डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा हैं जिन्होंने कैंसर सेंटर को इतनी जल्दी इतने अच्छे डायरेक्शंस में लाए, डॉक्टर विजय नाहटा हैं जिन्होंने लेप्रोस्कोपिक एंड हिस्ट्रोस्कोपिक सर्जरी में महात्मा गांधी हॉस्पिटल की एक पहचान पूरे देश में बनाई है, डॉक्टर R.C. गुप्ता हैं जो फिजियोलॉजी के हमारे टीचर हैं, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए किस तरह से काउंसलिंग प्रोसेस होती है, किस तरह स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, तो इस तरह के कई लोग हैं। यदि ये सब सम्मिलित होकर प्रयास करेंगे, बाकी जो भी लोग हैं, तो जो पार्ट रिसर्च का जिसमें हम थोड़ा सा लैकिंग है, जो डॉक्टर सुधीर सचदेव हमारे वाइस चांसलर साहब ने बताया और ऑनरेबल चेयरपर्सन डॉक्टर विकास स्वरणकार ने बताया, उसको हम पूरा करने के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सीनियर से कि वो इस रिसर्च के फील्ड में आ गए हैं। देखो 2025 में सिल्वर जुबली अपने संस्थान की होगी, 25 साल पूरे हो जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब 25 साल हो जाए उस समय अपने को 2500 बेड, 2500 बेड, 2500 बेड्स, इस समय हमारे पास करीब 1460 बेड है, तो लगभग 1000 बेड प्लस अपने को बढ़ाने हैं और बढ़ाने के साथ साथ वो ऑपरेशनल करने हैं। जितने भी पॉसिबल ब्रांचेज हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, सुपर स्पेशलिटीज़ की, मेडिकल में, डेंटल में, नर्सिंग में, फिजियोथेरेपी में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, बायोटेक्नोलॉजी में, हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स में, उन सारी ब्रांचेस को आपको आगे बढ़ाना है, आपको पब्लिकेशंस को आगे लाना है। अभी नेक का इंस्पेक्शन हुआ तो उसमें ये जो पब्लिकेशंस का इशू आया, क्योंकि ज़्यादातर जो डॉक्टर्स हैं वो प्रैक्टिस तो अच्छी करते हैं, क्लिनिकल पार्ट उनका बहुत अच्छा है, परंतु अनफॉर्चुनेटली इस पार्ट ऑफ कंट्री में रिसर्च जो वाला पार्ट है, पब्लिकेशन वाला पार्ट है, वो थोड़ा पीछे कंपेयरिंग टू साउथ इंडिया और कंपेयरिंग टू मुंबई। तो मैं ये सबसे कहना चाहूँगा, मैं दोबारा इस चीज़ को फोकस करना चाहूँगा कि इस तरह की यूनिवर्सिटी प्रोविजन डालें जो भी डॉक्टर विकास स्वरणकार ने बताए, जिससे कि संस्थान की एक पहचान बने और 2025 में हमारे पास मैक्सिमम कोर्सेज हों, हमारी नेक में 8++ ग्रेड मिले, हमारा जो NIRF का है उसमें हमारा सबसे बेस्ट कंट्रीब्यूशन हो और देश में और विदेश में हमें रिकॉग्निशन मिले। हमने कोविड में एक अपनी पहचान बनाई, जैसे धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिएचारी, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि धर्म की परीक्षा आपातकाल में होती है, और चिकित्सा धर्म की जो परीक्षा है उसमें महात्मा गांधी अस्पताल ने बहुत ही अच्छा किया, बड़े धैर्य के साथ। फर्स्ट वेव में जब कोई अस्पताल नहीं था तो सरकार के साथ साथ हमने कंधे से कंधा मिलाया, पूरे बेड्स कोविड की ऑफर किए। सेकेंड वेव में लगातार किसी पेशेंट को तकलीफ नहीं आने दी, जितना हम कर सकते उतना किया। और आज थर्ड वेव में भी, हालांकि ये वेव माइल्ड है, पर पेशेंट्स एब्सोल्यूट नंबर जैसा डॉक्टर विकास ने बताया काफ़ी हैं। इस वजह से आज की तारीख में आज सुबह भी 50 पेशेंट्स
इस अस्पताल में भर्ती हैं कोविड के, जिसमें से 18 पेशेंट आईसीयू में हैं और 8 पेशेंट वेंटिलेटर पे। तो अभी इसको लाइटली नहीं लेना है। ओमिक्रॉन की वजह से जो कोविड वेव है, क्योंकि अपनी देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, अभी काफ़ी बच्चे हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ नहीं है। 18 साल से या कुछ और ऊपर वाले जो लोग हैं, कोमोर्बिडिटीज़ वाले लोग हैं, उनका वैक्सीनेशन या उनमें इतनी इम्यूनिटी नहीं है। इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, साथ ही जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं वो करें। संस्थान मैनेजमेंट कभी कोई इसमें किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है कि जो मेरे छोटे भाई राम रतन सोनी जी हैं, वो दिन रात इस काम में लगे रहते हैं कि किस तरह दवाइयों का इंतजाम हो, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम हो। नॉन स्टॉप ये काम लगातार 20-22 साल से चल रहा है और आगे चलता रहेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर आगे जिस तरह से बढ़ रही है वो बढ़ेगी। देखो, जो भी देश है वो आज अपन क्यों याद करते हैं महात्मा गांधी जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, नेहरू जी को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को? क्योंकि इन्होंने कुछ समाज के लिए किया। इन्होंने अपने जान के, अपने खुद के स्वार्थों को कभी आगे नहीं आने दिया। देश के लिए इन्होंने किया, तो आज उनको याद करते हैं। ये शरीर जो 5 महाभूत और 3 मनोबुद्धि और अहंकार, ये जो 8 जो प्रकृति के रूप है, इससे आपको अपने आप को अलग मानना पड़ेगा। परंतु ये दोनों साथ साथ रहेंगे, ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि कुछ कंट्रीब्यूट करके जाएं समाज में, इस संस्था में, अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए, आपके साथ कुछ जाने वाला है नहीं, तो उसके लिए आप ये कोशिश करें कि हम अपनी तरफ से, आप किसी भी उम्र के हों, यदि आप यंग हैं तो बहुत एक्टिव रहिए, अच्छा काम करिए, और योग्यता अगर आप में है तो आप उस हिसाब से उस योग्यता का समाज के सदुपयोग के लिए काम करिए। ये क्लियर कट मैसेज है जो वेद व्यास जी ने फाइनली लिखा है कि धर्मो नित्य है, सुख दुखित्व नित्य, जीवो नित्य है, हेतुरशित्व नित्य है। यानी धर्म, आप उसको अर्थ की वजह से, आप पैसे की वजह से, उसको काम की वजह से, उसको लोभ की वजह से कभी आड़े मत आने दीजिए, क्योंकि वो ही नित्य है, वो ही सत्य है। बाकी जो कुछ है वो अनित्य है, उसके जो कारण है वो अनित्य है। तो आप व्यष्टि की बजाय समष्टि में जाएं तो ज़्यादा फायदा होगा। और यदि आप जिंदगी में शांति चाहते हैं, जैसा कि हमारे जो महापुरुष हैं जिन्होंने चाही देश का तरक्की करें, भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी साफ साफ बोला, एकदम स्पष्ट है कि 4 ही तरीके हैं शांति लेने के। विहाय कामान सर्वान पुमांस चरति निष्प्रह, निर्ममो निरहंकार ऐसे शांति मद गच्छति। यदि आप जिंदगी में शांति चाहते हो, जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हो, जिंदगी में समाज को कुछ देना चाहते हो, तो आपको कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा। जिससे पर्सनल, जिसमें आपके हित साधने हैं, ऐसी कामनाओं का आपको त्याग करना पड़ेगा। निष्प्रह है, इच्छा रहित होना पड़ेगा, निर्मम ममता को छोड़ना पड़ेगा। आप उसमें भाई बंधु भतीजा माता पिता आपके कर्म के बीच में बिल्कुल आड़े नहीं आने चाहिए। आप में कोई अहंकार नहीं होना चाहिए। यदि आपने कुछ प्राप्त कर लिया लाइफ में, तो ये इसमें सिर्फ आपका योगदान है, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग हैं जो आपसे अच्छे ज़्यादा विद्वान हैं, बहुत से लोग हैं जो आपसे अच्छा कर्म कर सकते हैं, परंतु ईश्वर ने आपको मौका दिया है। ईश्वर ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है कि आप डॉक्टर के पेशे में सेलेक्ट हुए, आप उसके बाद भी आप मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन में सेलेक्ट हुए, मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूशन में सर्व कर रहे हो। तो यहाँ शिक्षा और चिकित्सा, मेरे पिताजी श्री राम जी लाल जी स्वरंकार, वो चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। 1 साल मैंने सोचा कि मैं ब्यूरोक्रेसी में जाऊंगा, तो उन्होंने मेरे को डांटा कि नहीं, नथिंग डूइंग, आपको मेडिकल प्रैक्टिस ही करनी है, आपको चिकित्सा का क्षेत्र ही अपनाना है। इसी प्रकार डॉक्टर के.डी. गुप्ता जो हमारे जिनके नाम से लाइब्रेरी है, जो हमारे ट्रस्टी थे, यहाँ के सलाहकार थे, उन्होंने भी यही बोला कि मोहन, सबसे अच्छा यदि कोई प्रोफेशन है, सबसे अच्छा अगर सेवा का मौका भगवान देता है तो वो एक अच्छा चिकित्सक बनने का है। और इसमें आपको चिकित्सा और शिक्षा दोनों मिली है। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, सबसे मेरी गुजारिश है कि आप जितना हो सके
अपने संस्थान के लिए जो कुछ करोगे, जैसा भी डॉक्टर विकास ने बताया, जो डॉक्टर हरिगौतम जी ने शुरू में मैसेज दिया था, आप जाके कोई बॉर्डर पे नहीं कर सकते, आप और कोई पॉलिटिक्स में नहीं जा सकते, आप बिना कोई जाति के, धर्म के, किसी भी भेदभाव को भुला के सिर्फ मानव सेवा, चिकित्सा सेवा और चिकित्सा शिक्षा को लक्ष्य बनाएं और इस जीवन में कुछ दे के जाएं। ये मेरा आपसे अनुरोध है। वो आप मैं सोचता हूँ कि उसको आप जरूर बिल्कुल कर्तव्य परायणता के साथ करेंगे। और मैंने बड़े सोच समझ के, क्योंकि ये कोई पारिवारिक मामला नहीं है, बड़े सोच समझ के डॉक्टर विकास चंद्र को मैंने, डॉक्टर श्री राम रतन सोनी जी ने और ट्रस्टी जी ने, मीना जी ने, सबने सोच के ये निर्णय लिया है कि भाई डॉक्टर विकास इस समय सबसे योग्य है पूरे संस्थान के लिए, और संस्थान भी इस बात को धीरे धीरे एहसास होने लगा है। तो उसको आप माने, उनके निर्देशों का पालन करें, और एक तरह से वो मेरा ऐसा विश्वास है, ऐसा दृढ़ विश्वास है कि संस्थान को काफ़ी आगे ले जाएंगे। हमारा हमेशा उनके लिए आशीर्वाद है। तो इन शब्दों के साथ मैं आज एक बार दोबारा सबको भारत के 73वें गणतंत्र की शुभकामनाएं देता हूँ। देश स्वस्थ रहे, हम इस जो कोविड महामारी इसके से जल्दी निकलें, क्योंकि इससे लोगों की रोजी रोटी भी अफेक्ट हो रही है, बहुत काम अफेक्ट हो रहे हैं। तो सब लोग अपनी डिग्निफाइड लाइफ जिएं, प्रॉपर तरीके से एंजॉय करें और साथ में अपनी कर्तव्यों का पालन करें। इनके साथ मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। थैंक यू, आपने आज मुझे मौका दिया चीफ गेस्ट बनने का, इसके लिए मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जय हिंद। Thank you so much, sir. We are grateful to you for your blissful words and your continuous guidance. As we head towards the end of this Republic Day program, I now request Registrar Mahatma Gandhi University, Dr. A.K. Sharma ji, to deliver the vote of thanks. Good noon. Best wishes for the 73rd Republic Day of India. Respected Dr. M.S. Hon'ble sir, Honorable Chairman, India Education Trust, Emeritus Chairperson of the University and Chief Guest of today's function. Respected Dr. Vikas Swarankar, Honorable Chairperson, Dr. Sudhir Sachdev, Vice Chancellor, Dr. G.N. Saxena, Pro Vice Chancellor, Dr. Swati Garg, Dean Principal and Controller, Mahatma Gandhi Medical College and Hospital, Shri Ram Ratan Soni, Managing Trustee, India Education Trust and Chief Accounts and Finance Officer, Dr. Shobhit Swarankar, Director Hospital Administration, Honorable former and founder Chairperson of the University, Padma Shri Dr. R.P. Sunawala sir, former Vice Chancellor Dr. Harigotham and Dr. M.C. Mishra sir, all the members of the Board of Management and the Academic Council, all the principals of constituent colleges, faculty members, doctors, administrative officers, nursing, paramedical and other staff, dear students and all the persons who are watching and witnessing this program online. I extend my sincere greetings and thanks for joining this live program of Republic Day celebration. Everyone who has been working hard and has a concern to this institution for its development in any manner, I thank each one of them. Your sincere and dedicated contribution has taken the university to its present height. It shall further help to achieve our ultimate objectives for quality medical education and healthcare, and also to make the students good human beings of the nation. I wish everyone a safe, healthy and happy life ahead. Today, I also extend congratulations and best wishes to respected Srimati Meena Swarankar, Vice Chairperson, India Education Trust, on her birthday. Best wishes to Srimati Meena ji. Once again, I thank you all for joining today's celebration. Jai Hind, Jai Mahatma Gandhi University. Thank you. Thank you, sir. With this, we come to the end of today's program.
Once again, I extend my gratitude towards our Honorable Chief Guest, Dr. Swarankar sir, all eminent persons, dignitaries and faculty members for gracing this occasion and motivating us. Above all, I thank all the staff and students of our university and convey my best wishes to all for the year ahead. आइए हम सब अपने संविधान के प्रति अपने संकल्प को दोहराएं और अपने राष्ट्र को गौरवान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध रहने का वचन है। Thank you one and all. जय हिंद. I request all to rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे